Hello everybody, welcome to the live session by Infinity learned by Sri Chaitanya. I am Misbah, your maths educator, and in this session we are going to complete trigonometry as per CBSE grade 10 syllabus. So grade 10 syllabus के हिसाब से trigonometry में जो जो चीजें हैं उसे हम रिवाइज करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. तो चलो शुरू करते हैं गाइज. तो सबसे पहली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ऑलरेडी पता है, इसको एक बार देखते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, सबसे पहली चीज देखो, अगर तुम्हारे पास कोई एक ट्रायंगल है, सपोज करो ये पी क्यू आर और मान लो कि ये 90 डिग्रीज है, राइट. और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल जो है वो थीटा होता है. किसी भी एंगल को जनरली थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स अ ग्रीक लेटर. जैसे अल्फा बीटा गामा तुमने पढ़ा है, वैसे ही जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंगल इज थीटा, राइट. नाउ यू सी ओवर हियर गाइज, सो यू सी ओवर हियर, अगर ये एंगल ये थीटा है तो इसके सामने वाले एंगल को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है. और एडजेसेंट, सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं. अगर तुम इस एंगल की बात करो तो सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलोगे, सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलोगे और एडजेसेंट साइड को बेस बोलोगे, राइट. तो यहां पर किसी भी एंगल के लिए सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड जो बेस है, वैसे ही इस एंगल के लिए सामने वाला साइड क्यू आर इज परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड पी क्यू इज दी बेस. आई होप दैट्स क्लियर. और यहां पर देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है ही, हाइपोटेन्यूज तो पी आर ही होगा. अब यहां पर देखो किसी भी एंगल थीटा के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड, है ना. 6 क्यों होते हैं उसका भी सिंपल लॉजिक आपको पता है. जैसे देखो, क्योंकि अगर ये एंगल मैं लेता हूं तो इसके लिए सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड इज बेस और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है. तो साइन थीटा, देखो सारी चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको साइन ऑफ थीटा वैसे बोलते हैं. तो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. ये डिफाइंड इस तरीके से होता है ना. अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों होते हैं, क्योंकि देखो दिस अपॉन दिस करोगे फिर उसका रेसिप्रोकल, फिर दिस अपॉन दिस करोगे फिर इसका रेसिप्रोकल, फिर दिस अपॉन दिस करोगे फिर उसका रेसिप्रोकल. तो 3 साइड्स हैं तो 3 रेशियोज, फिर हर रेशियो का रेसिप्रोकल. तो इसीलिए किसी भी एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉसिबल. आई होप दैट इज क्लियर गाइज. सही है यहां पर. तो साइन थीटा पी बाय एच होता है. फिर उसी तरीके से कोसाइन ऑफ थीटा क्या होता है, कोसाइन ऑफ थीटा ये क्या होता है, इसको कॉस थीटा तुम लिखते हो, दैट इज इक्वल टू बी बाय एच, है ना. फिर उसके बाद तुम्हारे पास आता है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा जो कि होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो देखो अगर तुम यहां पर दिस अपॉन दिस करोगे तो पी बाई बी आएगा. तो टैन थीटा किसी भी एंगल के लिए पी बाई बी होता है. फिर देखो इन सब का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट ऑफ थीटा, कोसीकेंट ऑफ थीटा, या तुम इसको कोसेक थीटा बोलते हो, कोसेक थीटा. तो इसका रेसिप्रोकल देखो क्या होगा, एच अपॉन पी. उसी तरीके से देखो अगर कोसाइन ऑफ थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, या फिर इसको शॉर्ट में तुम सेक थीटा लिखते हो. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ, एच अपॉन बी. उसी तरीके से टेंजेंट ऑफ थीटा या टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको तुम शॉर्ट में क्या बोलते हो, कॉट थीटा. अब देखो टैन थीटा साइन बाय कॉस है तो कॉट थीटा कॉस बाय साइन होगा. ये भी आपको याद रखना है ना, कॉस बाय साइन होगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर ये एच अपॉन पी अपॉन बी है तो बी अपॉन पी होगा. तो यही चीज है, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए और ऑब्वियसली आपको अभी तक याद होंगी भी. उसके बाद देखो जो भी रेसिप्रोकल रेशियोज हैं, जैसे साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा. साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होना चाहिए. उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर तुम करोगे, रेसिप्रोकल रेशियोज हैं तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा. उसी तरीके से टैन थीटा और कॉट थीटा का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रेसिप्रोकल रेशियोज हैं तो प्रोडक्ट 1 होगा. ठीक है गाइज. तो ये चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए, बेसिक है बहुत ज्यादा, आपने शुरू में ही ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी. ठीक है, चलो
उसके बाद देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर बार आता है, कोई जरूरी नहीं है कि आ ही जाए, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। जैसे यहां पर आपको गिवन है कि 4 cot a इज इक्वल टू 3, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a। तो इसको आप डायरेक्टली आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहां पर तुम cot की वैल्यू निकाल सकते हो। cot a विल बी इक्वल टू व्हाट, 3/4। अब देखो cot, किसी भी एंगल का cot क्या होता है, cos बाय sin। तो ये cos a अपॉन sin a है, cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू 3/4। अब यहां से कुछ टाइम के लिए तुम cos a को 3x अज्यूम कर सकते हो और sin a को 4x अज्यूम कर सकते हो। सही है या नहीं है, बताओ। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली cos को 3 और sin को 4 लिख देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो वो कॉन्सेप्चुअली गलत है, सब्जेक्टिव एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों का रेशियो है। तो तुम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि cos जो है 3 और sin 4 होगा। मतलब किसी केस में होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो cos a को 3x और sin a को 4x तुम अज्यूम कर सकते हो और यहां पर बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 4x माइनस 3x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4x प्लस 3x। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज x अपॉन 7x। तो आंसर क्या हो गया गाइज, 1/7। ये आपका आंसर है। ऑलमोस्ट हर बार इस टाइप का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कोई कंफर्म नहीं है कि ये आ ही जाएगा, लेकिन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। आई होप दैट इज क्लियर। हेलो ऋषि, गुड आफ्टरनून। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में गाइज, बताओ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैंने वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो ये बताओ गाइज, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताओ गाइज चैट में कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारे पास, राइट एंगल एट Q, तो PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q, ठीक है। फिर यहां पर देखो PR प्लस QR यहां पर 15 गिवन है और PQ यहां पर 6 गिवन है, सही है। तुमसे यहां पर पूछा गया है कि sin P की वैल्यू बताओ। अब कुछ भी पूछ सकते हैं, sin P, cos P, tan P, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है गाइस। तो देखो यहां पर PR प्लस QR 15 है और PQ यहां पर 6 है। तो यहां पर तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि जैसे QR को मैं x बोल सकता हूं, ठीक है। तो PR क्या होगा बताओ, 15 माइनस x हो जाएगा अगर मैं QR को x बोलूं, और यहां पर PQ देखो 6 है। सही है गाइस। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 15 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा इफ एवरीथिंग इज करेक्ट एज पर कैलकुलेशंस, ठीक है। अब इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। ये देखो 36 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर a माइनस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करोगे तो 15 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर यहां से देखो एक्स स्क्वायर तुम कैंसिल कर सकते हो। फिर इसको फर्दर अगर कैलकुलेट करो तो देखो क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा 15 2 30, सो 30x दैट इज इक्वल टू ये 225 माइनस 36। तो 225 माइनस 36 करके देखो क्या आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई बात नहीं है ना। कैलकुलेशन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में इजी ही होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट करो, आई गेस दैट्स करेक्ट। तो 189 आएगा यहां पर, ठीक है। इसको चेक करो। तो यहां पर x की क्या वैल्यू आ गई गाइज, 189/30। सही है, 189/30। तो ये देखो इसको कैंसिल कर सकते हो। तो आई थिंक 6.3 यहां पर आ रहा है अगर कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। 6.3 यहां पर आया। अब देखो इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए, दैट दिस इज 6.3, ये 6.3 आ गया। कैलकुलेशन चेक करो, ये 15 माइनस 6.3, तो ये देखो क्या होगा, जैसे तुम्हारा 8.7 आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक करो। तो तुमसे यहां पर बोला गया है कि साइन P, अब कुछ भी यहां से बोल सकते हैं, किसी भी एंगल का साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, साइड ऑपोजिट टू इट इज द परपेंडिकुलर, साइड ऑपोजिट टू इट इज द परपेंडिकुलर। तो 6.3
और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा क्या है 8.7। तो इसको फर्दर चेक करो, 63/87 इज द आंसर। क्लियर है गाइस? तो इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस यहां पर ये है कि वैल्यूज कुछ चेंज कर दी मैंने। एनी डाउट इन दिस गाइस? जल्दी से कंफर्म करो चैट में, कोई डाउट है इस चीज में? चलो लेट्स मूव ऑन गाइस। देखो अब यहां पर हमें ये रिवाइज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूज याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पर डिराइव कर रहे हैं। हेलो सुधानवा, कोई बात नहीं, है ना, एग्जाम में आप डिराइव कर रहे हैं, ये उसका। हाय पार्थू, वेलकम टू दिस सेशन। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो साइन कॉस टैन, है ना, इसको रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ओवर हेयर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा आएगा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा आएगा। सही है। अब जो हमें स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हम रिवाइज करते हैं। थैंक्स पार्थू। चलो स्पैम मत करो प्लीज, डोंट स्पैम पार्थू, बिकॉज अदर स्टूडेंट्स विल हैव इश्यूज इन वॉचिंग द सेशन। ठीक है, सो ओवर हियर व्हाट यू कैन डू गाइज, यहां पर स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वीसी, यानी कि देखो 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। ऐसा नहीं है कि इसी के लिए होता है, इससे भी किसी भी एंगल का हो सकता है, लेकिन ग्रेड 10 सिलेबस में वी सी ओवर हेयर ओनली, यहीं तक हम देखते हैं। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब इसमें अगर अभी एग्जाम के टाइम में ये बोल रहे हो कि याद नहीं है, तो फिर थोड़ा सा उसमें मुश्किल वाली बात है ना। तो देखो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज 1। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर वैल्यूज फॉर कॉस गाइज? You see, whatever is the value of sine 90, that will be the value of cos 0. So cos 0 is 1. Cos 30 is equal to sine 60 is equal to √3/2. At 45, sine 45 and cos 45 will be equal. Cos 60 is equal to sine 30 is equal to half. Cos 90 is equal to sine 0 is equal to 0. That's how you remember values. Okay, Parthu? I hope this is clear, guys. Now you remember that tan theta is nothing but sine theta by cos theta, right? Tan theta is nothing but sine theta by cos theta. So therefore tan 0 will be 0/1, 0. Then tan 30 is half upon √3/2, that is 1/√3. Then tan 45 will be this upon this 1. Tan 60 will be this upon this √3. And tan 90 will be 1/0, which is not defined. In short, we can write not defined because division by 0 is not possible. In short, we can write not defined as ND. I hope that is clear up till here, guys. Any doubt in this, guys? Okay. Now, cosec is nothing but reciprocal of sine. So, cosec 0 will be reciprocal of 0, not defined. Reciprocal of this is 2. Reciprocal of this is √2. Reciprocal of this is 2/√3. Reciprocal of this is 1. Then sec is reciprocal of cos. So reciprocal of 1 is 1. Reciprocal of this is 2/√3. Reciprocal of this is √2. Reciprocal of this is 2. Reciprocal of this is not defined. 1/0 is not defined. Hi Jaivinder, welcome to this session. Any doubt in this, guys? जल्दी से बताओ। फिर cot देखो, it is the reciprocal of tan theta, right? So reciprocal of 0 is not defined. Reciprocal of this is √3. Reciprocal of this is 1. Reciprocal of this is 1/√3. And reciprocal of not defined will be 0. Because not defined was 1/0. Its reciprocal will be 0/1. That is 0. I hope that is clear, guys. Please confirm that quickly. So that's how you remember the values over here. Fine? चलो, तो इसी तरीके से वैल्यूज को याद रखते हैं हम। ठीक है, ओके। तो इस पे एक क्वेश्चन करो गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो व्हाई आई हैव पुट दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी चीजें, 2-3 चीजें एक साथ यूज हो गई ना, 3-4 चीजें। हेलो कुलदीप, वेलकम टू दिस सेशन।
तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? Just calculate quickly and let me know the value, guys, in the chat. You just have to like recall those values. So over here you see cot 30 is what? Cot 30 is equal to reciprocal of sine 30, that will be equal to root 3, right? Tan 30 is 1 by root 3, so cot 30 will be root 3. Then cos 45 will be 1 by root 2, so you have to put 1 by root 2 the whole square, correct? Then you see this is 3. Then sine 60 is root 3 by 2, so cosec 60 will be 2 by root 3, the whole square over here. You just have to simplify these things. Sec 60 is equal to reciprocal of cos 60. Cos 60 is equal to sine 30, so that is 2. Cosec 30 is reciprocal of sine 30, that is 2. Tan 60 is root 3. So root 3 square over here. Is that clear? Hi Chuck Queen, welcome to this session. I guess that is correct, guys. Let's see that. So root 3 square is 3 over there plus 4 into half, 1 by root 2 square is half plus 3 into 4 by root 3 square is 3, and in the denominator this is 4 minus root 3 square is 3. So you can just simplify that. So this is nothing but 9 upon 1, that is 9. 9 is the correct answer. Is it clear, guys? Just confirm that quickly. So it's a direct question. You can very well expect a question like this in any exam on the basis of trigonometry, because they can check your memory as well many a times. I hope it's clear. Okay, let's move on to the next one. Fine. Try doing this one and let me know the value of A and B. These are very standard questions you can expect anytime. After that, I have put some different questions in trigonometric identities, okay? Some different questions in trigonometric identities. Obviously, those are also standard. वो भी standard ही है. बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड में कोई एक ऐसा, अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ते नहीं है साल भर, तो क्वेश्चन टफ आ जाता है तो फिर हाहाकार मचा रहता हर जगह कि अरे कहां से आ गया, कहां से आ गया. कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा तुम्हें दिखता है बोर्ड एग्जाम में क्या, कि बताओ जो कम से कम RS अग्रवाल या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, NCERT एग्जाम्पलर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन दिखा है क्या? हो ही नहीं सकता भाई. वो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें क्यों देगा वैसा क्वेश्चन? अगर तुम सिर्फ NCERT करोगे तो तुम्हें लगेगा ही वो उससे भी बाहर है ना. सिर्फ कुछ लोग ना मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, उनका ये चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम जेई जैसा आ रहा है. हास्यास्पद, हंसने वाली बात है ये. एक आध क्वेश्चन आ जाना अलग चीज होता है, ठीक है? चलो ओके, लेट्स डू दैट. तो देखो sin 60 is root 3 by 2, राइट? sin 60 is root 3 by 2, sin 30 is half. Now don't do this. बहुत सारे बच्चे ना ऐसे कट कर देते हैं. देखो कट कभी मत करना, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है. दिस इज नॉट अ वेरिएबल. साइन यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है जो तुम उसको कट करोगे, ठीक है ना? ये कंपैरिजन है कि ये दोनों चीजें इक्वल होंगी. a plus 2b that is equal to 60, फर्स्ट इक्वेशन. फिर यहां पर देखो cos 90 0 था, sin 0 0 cos 90 0, तो यहां पर भी सॉरी cos 90, राइट? तो कट करने का कोई मतलब नहीं है. a plus 4b यहां पर क्या है बताओ? a plus 4b is equal to 90. तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ट्रीट करो. देखो यहां पर a के कोएफिशिएंट सेम है, एक आध क्वेश्चन अंशुमन, ठीक है ना, कोई उससे ज्यादा नहीं. ये सेम है तो इसका मतलब तुम एलिमिनेट कर सकते हो a को. सो वी कैन डू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. 4b माइनस 2b इज 2b ओवर हेयर, एंड दैट इज 90 माइनस 60 30 होगा. तो b की वैल्यू क्या हो गई जल्दी से बताओ? 15. सही है, तो b की वैल्यू 15 तुम यहां पर पुट कर सकते हो. तो a प्लस 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 60. तो ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कुछ बड़ा वो नहीं है.
तो 60 minus 30 is 30. I hope that is clear. So 30 and 15 is the correct answer. हाँ वही बात है, मतलब वही है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो माइंड में मत करना, वहां लिखना थोड़ा सा, है ना, वहां पर लेजीनेस मत दिखाना, वहां पे लिख देना. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन दिस सेशन. जल्दी से कंफर्म करो गाइस. चलो ठीक है, चलो उसके बाद हम रिवाइज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर क्वेश्चंस करेंगे और, है ना, डोंट बॉदर, क्लास में रहो आराम से. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहला आइडेंटिटी क्या है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. अब यूज करने के हिसाब से क्या देखो, क्या तुम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? बताओ. तो यहां से बताओ कि साइन थीटा को तुम यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो. वैसे प्लस माइनस होगा, देखो वैसे प्लस माइनस होगा, लेकिन हम लोग ग्रेड 10 तक स्कूल में सीबीएसई में हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 ही पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव ही होंगे. ठीक है, करेंगे श्लोक, करेंगे. ठीक है, तो उसी तरीके से फिर यहां पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो. तो यहां से देखो कॉस थीटा को क्या कर सकते हैं हम? कॉस थीटा को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये यूज के हिसाब से ये सारी चीजें कर सकते हो. कोई इसमें प्रॉब्लम है बताओ? ठीक है यहां तक? हाँ वही बात है जयविंद्र, सही है. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं है? तो इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन लोग करा ही होगा तुम लोगों ने. ये मैं देता हूं, हर जगह दे देता हूं, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, तो करो इसको. इसकी वैल्यू बताओ, चलो देख के ही बता दोगे तुम. दिमाग में ही कर लोगे तुम. बताओ इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, जल्दी से बताओ. What is the value of this expression? Try करो guys. तो कई बार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, वो क्या करते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को मिला देते हैं. कई बार क्या, बहुत बार कर देते हैं ना, तो उसी से लोगों को फिर क्या होता है, क्वेश्चंस लगने लगता है टफ. हेलो नेक्स्ट टॉपर, वेलकम टू दिस सेशन, है ना. तो उसी में क्या होता है, लोगों को क्वेश्चन लगने लगता है टफ. तो वैसा नहीं है, अगर आपको क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है तो तुम इसको आराम से कर सकते हो. देखो क्या, इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, सही है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. समझने के लिए, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा. अगर तुम सही से नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, मतलब. तो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर. सही है यहां तक? उसके बाद देखो यहां पर -6 है. क्लियर है? हाँ. अब यहां पर देखो क्या है, देखो अगर तुम इसको a सोचो और इसको b सोचो, तो क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो गया? बताओ, सही है. तो इसमें क्या हो गया, क्या ये a प्लस बी दी होल क्यूब यहां से होगा, a प्लस बी दी होल क्यूब. तो बताओ मुझे यहां पर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -6 यहां पर आएगा. अब देखो ये 1 है या नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करोगे तो 1 होगा, तो 5 - 6 -1 इज द आंसर. क्लियर है गाइज? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है. 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एवरी चैप्टर का मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूं. ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का मैंने इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 और 10 यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला है, उसको देखो एक बार नेक्स्ट टॉपर. ठीक है, चलो आई होप इट इज क्लियर अप टिल हियर. कोई बात नहीं सुधानवा, आई होप ये क्लियर है. जल्दी से बताओ, सही है. तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, प्रूव करना है. प्रूफ कोई पूछेगा नहीं, 1 मिनट में तुम समझ लो, फिर मैं बाकी के आइडेंटिटीज प्रूव नहीं करूंगा. ठीक है, जैसे इसका देखो, तुम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर ले लो और फिर मान लो ये थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा,
तो अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना चाहते हो तो यहां पर देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा, और कॉस थीटा ये होता है बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसीएम अगर लोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, तो ये एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1 हो गया, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर कभी पूछ ले, वैसे नहीं पूछेंगे ये। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है। चलो उसके बाद जो सेकेंड आइडेंटिटी एज पर दी सिलेबस है उसको ध्यान से देखना। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका प्रूफ भी करना चाहो तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको p बाय बी लिख दो, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लग के प्रूव हो जाएगा, है ना, वो कोई नहीं पूछता है, वो भी करके देख सकते हो तुम। ठीक है, अब यहां पर देखो कि यूज करने के हिसाब से तुम यहां पर tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। फिर यूज करने के हिसाब से tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। तो ये यूज के हिसाब से होता है। अरे ये सही नहीं लग रहा, एक सेकेंड दो। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, यहां पे एक चीज जो यहां पर एक और देखने वाली बात यह है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम 1 बोल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 बोल सकते हैं। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा जो 1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज करने के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की सेक थीटा प्लस tan थीटा को तुम 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हो, है ना। वैसे मुझे ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, या इसको ऐसे बोलो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा को, सेक थीटा माइनस tan थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो, 1 बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा। सही है यहां तक, बताओ, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये दो तरीके हैं, इसको याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा, डिपेंडिंग अपॉन दी यूज, इनमें से कुछ भी यूज हो सकता है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। उसी तरीके से तुम्हारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या है, यहीं पर लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिख देता हूं सही से। थर्ड आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सबको याद है, नहीं याद है तो फिर मुश्किल वाली बात है यहां पर। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी यूज। तो यहां से तुम कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हो, कॉट थीटा को स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। फिर यहां से एक चीज और देखो निकल कर आएगा, सेम चीज कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हो। तो फिर यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करोगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आएगा 1। तो वही चीज है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सही है गाइस, कोई डाउट है इसमें जल्दी से बताओ। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने ये चीज सही से नहीं पढ़ा, मैं तुम्हें ऑनेस्टली सीरियसली बता रहा हूं, अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो सोचता रहेगा, और अगर आंसर लाएगा भी तो टाइम लगाएगा ना, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। फालतू का टाइम एग्जाम में किसी के पास नहीं होता है। तो इसीलिए ये चीज मैं हर बार बताता हूं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना बहुत आसान है। जैसे मैंने यहां पर इसको प्रूव किया वैसे ही ये होगा, कोई तुमसे पूछेगा नहीं, ये नहीं है सिलेबस में, प्रूफ नहीं पूछते हैं आइडेंटिटी का। आई होप दैट इज क्लियर। पूछ लेंगे तो भी मैंने बताया आपको कि tan को p बाय बी रखो, इसको अगर तुम p बाय बी रखोगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ये क्या होगा, ये तुम्हारा सेक ही होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। बताओ, प्रूफ भी हो गया 1 मिनट में। वैसे ही ये भी प्रूव हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। अगर पूछा गया तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है गाइस,
चलो अब इसको बताओ कैसे होगा गाइस, इसकी वैल्यू बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ इस टाइप से। अब मैं देखो कोई इंसान बोल ही नहीं सकता कि ये वाला आ जाएगा या ये वाला आ जाएगा। अगर ये कोई बोल रहा है तो मतलब झूठ है भाई वो सब। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं उसमें। वो देखो वो मैं भी 50-40 क्वेश्चन बता दूंगा, उसमें से 10-20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा। मैथ में कोई इंसान रट थोड़ी सकता, लिख के तो वही आएगा जो पढ़ा होगा जिसने। किसी को अगर तुम 4-5 घंटे पहले भी क्वेश्चन पेपर दे दो मैथ का, वो क्या कर लेगा बताओ, क्या करेगा वो, रट थोड़ी लेगा क्वेश्चन को, आंसर रट थोड़ी सकता, मैथ में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये बात मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझने वाली बात है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूरा भी मिल गया ना, कोई अगर बच्चा तो वो अगर एक दिन पहले अगर वो पढ़ता नहीं है तो वो थोड़ी ना वो 100 में 100 लेके आ जाएगा। हो जाएगा क्या ऐसा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो जिसने पढ़ा नहीं पहले से वो रट थोड़ी सकता है मैथ्स को। कुछ क्वेश्चंस रट लेगा, हाँ ये हो सकता पास वास हो जाए, उसमें भी बहुत कम चांस है। नंबर उसी के आएंगे जो पढ़ के जाता है, पहले से पढ़ा होता है किसी ने। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन तुमने कई बार देखा होगा। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल गिवन है, और ये चीज गिवन है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा की वैल्यू दोनों इक्वल है। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब यहां पर देखो सिचुएशन ये है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, वन सही है अंशुमन, ज्यादातर जो क्वेश्चंस तुम देखते हो मोस्ट प्रोबेबली, मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं, तुमने अगर पहले किए हैं तभी वो एग्जाम में भी होंगे। यही होता है ज्यादातर में। कुछ एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि चलो ठीक है तुम्हारा लॉजिक लग गया, वो एक अलग है, क्योंकि टाइम का प्रेशर भी होता है। तो यहां पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहां पर हम y के जगह पे, क्या हम y के जगह पे x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं? y के जगह पे ये लिखकर यहां पुट करो तो देखो ये तो x साइन क्यूब थीटा हो ही गया, x साइन क्यूब थीटा हो गया। फिर y के जगह पे हम ये लिख देते हैं x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब थीटा, तो वहां पर है देखो कॉस क्यूब थीटा, फिर ये इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा होगा। सही है। अब तुम यहां से देखो एक कॉस क्यूब कॉस थीटा कटेगा यहां पर, तो यूल बी लेफ्ट विथ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं? तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, एक्स भी कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहां पर फिर क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहां पर साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ बताओ कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा है। सही बात है, x की वैल्यू कॉस थीटा है यहां पर, तो यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू कॉस थीटा यहां पर पुट करो इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो है ही, तो यहां से तुम कॉस थीटा कैंसिल कर सकते हो। तो इसका मतलब यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। क्लियर है? तो x की वैल्यू आ गई कॉस थीटा, y की वैल्यू आ गई साइन थीटा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 1 होगा ही, क्योंकि x स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। क्लियर है गाइस? जल्दी से बताओ चैट में गाइस, इज दिस क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन दिस सेशन? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेरी वेल एक्सपेक्टेड होते हैं ये सारे सवाल। आई होप इट्स क्लियर। चलो अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, चलो एक क्वेश्चन ये वाला मैंने रखा है यहां पर, बताओ इसका आंसर। ये मैंने पहले भी करवाया, कोई नया इसमें नहीं है, लेकिन मैं हर बार बताता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया। चलो तुम एक बात बताओ कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू x अगर है, मान लो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर x गिवन है, तो सबसे पहले बताओ कि सेक थीटा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्वेश्चन तो तुमने कितनी बार देखा होगा भाई इस टाइप के सवाल, अगर पढ़ा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर x है तो सेक थीटा की वैल्यू बताओ, फिर सॉरी सेक थीटा की वैल्यू बताओ और टेन थीटा की वैल्यू बताओ। सेक थीटा की वैल्यू बताओ और टेन थीटा की भी वैल्यू बताओ यहां पर। चलो जल्दी से बताओ गाइज, अभी जस्ट मैंने एक रिजल्ट प्रूव करके आपको दिखाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
है ना, प्रूव करके अभी आपको बताया था वो वाला रिजल्ट करेक्ट है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए, सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो जब सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक्स है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1/x हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आ गए या नहीं आ गए, बताओ। अब यहां से तुम्हें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो तुम क्या करोगे, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो टैन थीटा को एलिमिनेट यहां से कर दो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड को हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो माइनस टैन थीटा एंड प्लस टैन थीटा विल बी कैंसल्ड आउट, तुम्हें क्या मिलेगा, 2 सेक थीटा, तुम्हें क्या मिलेगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x मिलेगा, ठीक है। अब इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा। अब यहां से देखो सेक थीटा की क्या वैल्यू आ गई, सेक थीटा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है। यहां से बताओ, अब बताओ यहां से टैन थीटा की वैल्यू, बिल्कुल टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तुम सेक थीटा को एलिमिनेट कर सकते हो। तो उसके लिए तुम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर सकते हो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेक थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। सेक थीटा तुम्हारा यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस टैन थीटा, तो -2 टैन थीटा आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से +2 टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोलो, +2 टैन थीटा की वैल्यू होगी 1/x माइनस x, है ना। इस चीज को ध्यान में रखो। तो आई थिंक तुमने ये मिस्टेक करा होगा यहां पर अंशुमन, इस चीज को ध्यान में दो, है ना। ये आएगा देखो, क्योंकि यहां पर मैंने ये दे दिया था, तो क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखो, है ना। तो 2 टैन थीटा, यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहां से देखो टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टैन थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। सही है यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूं, तुम्हें बस ये इक्वेशन दे देंगे, मैंने क्या बोला कि बस ये देकर ये तुमसे बाकी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं, बाकी के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो तुमने यहां पर तुम सेक ले आए हो, टैन ले आए हो। अब तुम सेक और टैन ले आए हो तो बताओ यहां से कॉस ला सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। कॉस का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से टैन अगर आपके पास है तो तुम यहां से कॉट ला सकते हो कि नहीं, बताओ। कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। उसके बाद अब बताओ साइन थीटा कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। साइन थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से, यहां पर से साइन थीटा की वैल्यू जल्दी से बताओ। Yes, I can very well do that. I'm sorry for that, Sarvesh. Actually, I get confused in that because some students write to explain in Hindi and some students write to explain in English. But I don't have any problem. Don't bother, I'll be explaining in English only. So you see, what is sine theta, guys, from here? If you can understand that, can I say that sine theta is nothing but tan theta upon sec theta? Is that correct, guys? Yes or no? Because you see, what is tan theta? Tan theta is nothing but sine theta by cos theta. And what is sec theta? It is 1 by cos theta. So you see, isn't it only sine? So it means tan upon sec we have to do tan upon sec. So we have to do basically 1 minus x square upon 2x upon sec theta. Sec theta is x square plus 1, x square plus 1 upon 2x. So can we just cancel out 2x? So the answer is 1 minus x square upon, you can write like this, 1 plus x square. So this is sine theta over here, correct, Anshuman? So if you have got sine theta, we can obviously find cosec theta as well. Cosec theta will be the reciprocal of this thing. So 1 plus x square upon 1 minus x square is the value of cosec theta. I hope that is clear, guys. Please confirm that quickly in the chat, everybody. Is that clear to every student in this session? Okay, so that is the answer.
Now this is another very important question. I must have taken it earlier as well. If sec theta is given a plus 1 upon 4a, you have to find the value of sec theta plus tan theta. Please let me know the answer quickly. Please let me know the answer quickly. And then we have got some other very important type of questions. You see, I know that many students have problem in this. I'm pretty much sure about that. These types of questions, basically trigonometric equations in grade 10 examination. Many students have issues in that thing. I'm pretty much sure about that. Therefore, I have put those questions in this session. So you see over here, you know the value of sec theta. Now what is tan theta, guys? Do you remember the formula? Tan square theta is nothing but sec square theta minus 1. So can I not say that tan theta, or just put it like that only, tan square theta is equal to sec theta is given a plus 1 by 4a the whole square minus 1. Can we say that? Yes or no? So over here, guys, you see this is nothing but a square plus 1 by 4a the whole square plus 2 into a into 1 by 4a. Is that correct? And then 1 by 4a, and then you have got minus 1. So you see, you can cancel out this thing, and this is nothing but half. So it is basically a square plus 1 by 4a the whole square. And then you see this is nothing but half minus 1 minus half. Is that clear? Is that clear up till here, guys? So you see, half was this. Let me write it properly. So this is a square plus 1 by 4a the whole square. You see, half was this. So minus half is exactly the same thing. Minus 2 into a into 1 by 4a. Why we are doing it? Because we want to fix it in the form of identity. Suppose this is x square plus y square minus 2xy. So isn't it x minus y the whole square, a minus 1 by 4a the whole square? Yes or no? Is that clear, guys? So you see over here, tan square theta is equal to this thing. So what is the value of tan theta, guys? You will get two values because it is quadratic, you can say. Quadratic equation in tan theta. So tan theta is plus minus a minus 1 by 4a. This is the value over here. Two values of tan theta are possible. Now we have to find the value of sec theta plus tan theta. You see, sec theta is already given there, a plus 1 by 4a. And then two values of tan theta are this. So once I can put plus, the plus thing I can put, so that is a minus 1 by 4a. So you see this will be cancelled out. So 2a is one answer. The other answer will be what? Sec theta is a plus 1 by 4a only. Then I'll put the negative thing over here. So minus a minus 1 by 4a. And then you can obviously simplify. This is nothing but a plus 1 by 4a, and then you can open up the bracket minus a plus 1 by 4a. So you see this will be cancelled out. You have got 1 by 4a plus 1 by 4a. It is nothing but 1 by 2a. So you see two answers are possible, 2a and 1 by 2a. Is that clear? Two answers are possible to this question and both will be correct. If it's a subjective examination, a written examination, you can write it. This question was asked earlier as well. This is important. I hope it is clear to every student in this session. Please confirm that quickly in the chat, guys. Okay, fine. Let's move on. Now you see, this is another important question. Although this is from NCERT exemplar, see, again I am saying, if you have got standard mathematics, NCERT, only NCERT is absolutely not enough. You have to do at least post-COVID questions, previous 3-4 year questions, and then NCERT exemplar as well. I know that many students have issues in this. Can you tell me what? Okay, we have to prove it. The first part. They can ask you to prove it as well, or maybe they can ask the value of tan theta as well. That is up to them, yes or no. Like over here it's written that prove that tan theta is this, but they can say that find the value of tan theta as well if this equation is given. Okay, so there can be more than one ways of solving it. I'll tell you my way of doing it. Okay, so this is nothing but 1 plus sine square theta
is equal to 3 sine theta cos theta. Got it? So I will try to, hello Shadow, welcome to the session. I'll try to convert this equation in the form of sine theta. Am I right? I'll try to convert this equation in the form of sine theta. Okay, that's okay, Shadow. So what will I do? Can I divide this equation by cos square theta on both the sides? Tell me. If I divide this equation by cos square theta on both the sides, you will be able to convert this equation in the form of tan theta. And then your work will be immediately done. You see, I've divided by cos square theta. You might think that, sir, how you are thinking that? That can also be done. This is my way of explaining, Anshuman. Again, I have said that there can be more than one ways of solving it. No problem in that. Okay. So over here, I can write it 1 by cos square plus sine square by cos square. I can separate it out 1 by cos square theta plus sine square theta by cos square theta. Correct or not? Cos square theta. And this is nothing but 3 sine theta by cos theta, that is 3 tan theta. Now, you see, this is nothing but sec square theta, and sine square theta upon cos square theta is tan square theta, and that is equal to 3 tan theta. I want to convert the whole equation in the form of tan theta over here. So can I write sec square theta is equal to 1 plus tan square theta? Tell me. I can write 1 plus tan square theta, and then tan square theta was already there. So tan square theta, and then minus 3 tan theta I can take over here. So you see, we have got a quadratic equation in tan theta or not. Just simplify that. So 2 tan square theta minus 3 tan theta plus 1 is equal to 0. I have converted this equation in the form of a quadratic equation in tan theta. Then you know how to factorize and solve a quadratic equation, right or not? You see, the product of this coefficient 2 and 1 is 2. So I want to split the middlemost number into two such numbers whose product is 2. So minus 3 can be written as minus 2 minus 1. That's it. You'll get the answer. You see, minus 3 tan theta can be written as minus 1 tan theta, just to make you understand. And then I can write minus 2 tan theta. And then over here, plus 1 is already there. So you have got two groups, first group and the second group. Out of the first group, you can take only tan theta is common. And you'll be left with 2 tan theta minus 1. 2 tan theta minus 1. Out of the second group, I can take minus 1 as common. You'll be left with 2 tan theta minus 1, that is 0. Now again, I can take 2 tan theta minus 1 as common. 2 tan theta minus 1 as common, and I'll be left with tan theta minus 1 in the bracket. That's how you solve a quadratic equation. So you see, two values of tan are possible over here. If you put this is equal to 0, the first factor is equal to 0, you'll get tan is equal to half. If you put this is equal to 0, you'll get tan is equal to 1. So tan theta is half and 1. Is it clear, guys? And that's what you needed to do in this question. Any doubt in this question, guys? And obviously, if it is asked in the examination, you have to write these reasons. You have to write in the bracket that since sec square theta is 1 by tan square theta, you have to write that since 1 by cos square is sec square, since sine square upon cos square is tan square. You have to mention these things in the answer. Isn't it clear, Sarvesh? Okay, let's move on, guys. Let's do the next part. That is again important. This one, the second one. How can we do this? They can obviously ask you to prove it, or they can ask the value as well. This is very important. And I've seen many students having problem in this question, in this type actually, not exactly this one, maybe some other questions as well. So if it is given that sine theta plus 2 cos theta is 1, you have to find the value of, just find the value of this, na? Automatically it will come. Find the value of 2 sine theta minus cos theta. Okay, just understand and remember this logic for life. Fine. The moment you have been given a question like this, see this. They can give you a question like this. A sine theta plus B cos theta. A sine theta plus B cos theta is equal to C. They will give something like this. And then they will tell you to find the value of A sine theta minus B cos theta. You must have seen many questions like this. Am I right? Are you getting it?
So, or they can give a sine minus b cos, and then they can ask the value of a sine plus b cos. Are you getting it? This is a very standard problem which they give in exams. Okay, you just don't have to do anything. Take the squares of them, sum of their squares. So you just have to do sine theta plus 2 cos theta the whole square, sine theta plus 2 cos theta the whole square, plus 2 sine theta minus cos theta the whole square. That's it. And then first simplify this. Simplify this. I can use a plus b the whole square identity. I'll get sine square theta plus 2 cos theta the whole square will be 4 cos square theta. Please understand, this is important. I'm being honest about that. It is important. Exactly. So if you take, you'll get 4 sine theta cos theta or not. 4 sine theta cos theta. Then over here, if you'll use the identity, you'll get 4 sine square theta, a minus b the whole square identity, plus cos square theta, then minus 4 sine theta cos theta you'll get, minus 4 sine theta cos theta. So you see this will be cancelled out. Now what is this, guys? 4 plus 1, 5 sine square, 4 plus 1, 5 cos square. So 5 sine square theta plus 5 cos square theta. What is that, guys? 5 you can take as common. You'll be getting sine square theta plus cos square theta, right or not? Now sine square theta plus cos square theta is 1. So this is equal to 5. Correct? This is 5. Now it was already given that this thing is 1. This thing is 1. So it is 1 square over here. Plus this you want. Now easily you can find 2 sine theta minus cos theta the whole square. And that is equal to 5 over here. So from here, can I not say that 2 sine square minus 2 sine minus cos the whole square, that is equal to 5 minus 1, which is 4, which is 2 square. So two values of 2 sine minus cos are possible, but I mean 2 sine minus cos, you will neglect the negative value, right? So minus 2 and 2. I mean, see, I can't go beyond grade 10. Maximum value over here is, I guess it can never be minus 2, right? It can never be minus 2 because the minimum value of this one will be what? The minimum value, the maximum value of this one will be what? 1. And then minimum value of this one will be 0. Okay, so you can never get minus 2. You got that or not? Anyways, up till grade 10, you have to take the positive value only. Yes. Is that clear up till here? Any doubt in this question, guys? Please confirm that quickly. So these were the important questions in identities. Obviously, we did many questions earlier as well. Now let's practice some questions on heights and distances. These are previous year questions. I have just changed some of them as well. And I have taken some very famous questions on NCERT exemplar and NCERT and previous year question. Let's practice them up. And believe me, they are good questions only. As per your board exams, they are good. Apart from board exams, I mean, they are not good. You can say that. If you talk about your foundation syllabus, IIT JEE foundation syllabus, then these questions are not that much good. But still, they are okay. So this is a previous year board question. Let's do the question, guys. The angle of elevation of the top of a tower 24 meter high from the, and please check for calculation mistakes. You can forgive me for that because obviously I can, you understand, I'm standing and writing, it happens. When you stand and write, it happens. And when you write in the notebook, that's a different case. Okay. The angle of elevation for the top of a tower 24 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60. Okay. So two towers over here, like this, yes or no? Angle of elevation on top of a tower from the foot of another tower in the same plane is 60. So this will be 60, right? This will be 60 degrees and this is given to be 24 meter. Let's do it. 24 meter. Correct? 90, obviously 90, 90. Okay. Fine or not? Let's do the second part. The angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30. Obviously, this will be 30, right? This will be 30. Fine.
So what you have to find the distance between the two towers, suppose x, height of the other tower, suppose y, this you have to find. Okay, then the last part we will do later. First we can calculate x and y. Can you tell me what is the value of x over here, guys? Quickly answer that in the chat. What is the value of x over here? That's very simple. If you can name the triangles over here, suppose I'm naming it A, B, C, D over here. So if you use the triangle ABC, if I use the triangle ABC over here, I can use tan 60 na? Tan 60 I can use. So tan 60 is perpendicular upon base 24 upon x. Tan 60 is root 3, so that is equal to 24 upon x. So from here x will be what, guys? 24 upon root 3. You can obviously rationalize the denominator over here by multiplying by root 3 in the numerator as well as the denominator. Correct or not? Correct. That's correct. Very good. Yeah, let's do that quickly. So root 3 into root 3 is 3. 3 8s are 24. So the distance between the towers is 8 root 3 meter. Now one more thing. See, it is not mentioned in the question that you have to take root 3 to be something. Am I right? Is it mentioned? No. It is not mentioned that you have to take root 3 is equal to 1.73 or 1.732. So don't take any value. Leave it like that. Are you getting it? Just leave it. Don't waste your time. Fine. Now can I use triangle DBC? Can I use triangle DBC over here? So over there I can use tan 30, right or not? Tan 30 is perpendicular upon base. So that is y upon x over here. Tan 30 is 1 by root 3. And y upon x is already there. We already have got 8 root 3. So therefore the height of the other tower over here is what? 8 meter. We have got it. Height of the other tower is 8 meter. Is that correct? Yes. Now we have to find the length of the wire attached to the tops of both the towers. This we have to find. Can you tell me the answer? Suppose it is Z. And obviously you have to make sure that that's a straight line only, because if you take a slacked wire, you understand slack wire? This is a straight wire and this is a slack wire. You can't find its value. I mean, there is no point of doing that question. Yes or no? Now the last part is simple. It's a bit tricky. Can you tell me the answer, guys? So basically it's not compulsory that you have to use trigonometry only. You can use Pythagoras theorem as well. Okay. If I drop perpendicular over here, guys, this will be 90. So you see this becomes a rectangle or not? Yes or no, guys? This becomes a rectangle. So this length is what? This is nothing but, this is x. So this is also x, 8 root 3. Correct? X was 8 root 3 over here. We have got it. And similarly, if this is y, this is also y. So this distance is 8 because y is equal to 8. So can I not say this is nothing but, what about this? 24 minus 8, 16 or not? Tell me. This is 16 or not? This is 16. So I can use Pythagoras theorem in this right angle triangle. That's it. Pythagoras theorem. So z square will be what? Tell me. Z square is equal to 16 square plus 8 root 3 the whole square. Now instead of just finding the formula over here, I'll tell you a small method. Can we write it like this? 8 square into 4, can I say? And this is 8 square into 3. Can we say that? So 8 square you can take as common, or you can directly say if you want, if you understand that. 8 square into 7. So can I not say z is equal to plus minus 8 root 7, but because that's a distance, so we'll neglect the negative value. So 8 root 7 is the answer. Is that clear, guys? Tell me. Any doubt in this question? Just quickly comment in the chat, guys. Have you understood this method? Have you understood how we have done it quickly? Obviously, if you will multiply and add and then you will find the square root, it's a sheer wastage of time. It's a sheer wastage of time if you're doing like that. It's not just about getting the correct answer. It's about getting it on time as well. I hope it's clear. Let's move on to the next one. So you see, this is an NCERT question, but this is important. Can you tell me what is the answer to this question? Therefore, I have put it.
Anshuman, therefore this question is favorite, my favorite, because in the last part many students do mistake. I hope it's clear. Okay. So what is the answer to this question, guys? This is an NCERT question, directly copied and pasted, but that is important. Many students have confusion in this question. Yes or no? So a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30. Only you see 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 questions are left. And they are very important. All of them I have picked and chosen question. 30 and 60. So you see this top of the tower, a car is coming like this. So angle of depression is given to be 60. Initially it is, obviously it will be 30 only. So you see, if this is 30, guys, this is parallel or not. So this will also be 30, alternate interior angles. Then the car is coming towards the tower. Then the angle of depression has become 60 degrees. So you see, this is parallel to this. So this angle will also be 60, alternate interior angles. Correct? I hope it's clear. Now over here, you have to find the time. Suppose the speed of the car over here is what? They are talking about seconds, na? Suppose speed of the car is x meter per second. You can assume that speed is this. There is no point in assumption. There is no problem in assumption. Okay. Now it is written 6 seconds later. So from this point to this point, 6 seconds are being taken and the speed is x meter per second. Can we say that this distance is 6x meter? Because distance is equal to speed into time. And this is 90. Suppose height is h and suppose this is y. Is this clear up till here? I guess 3 seconds. Yes, that's correct, Sarvesh. It is correct. So from here we have to take the larger triangle, guys. Can I take 30, tan 30 over here, perpendicular upon base? So h upon 6x plus y. If anything is not clear, please let me know. So this is 1 by root 3, that is h upon 6x plus y. You can very well cross multiply. You will get 6x plus y. That is equal to root 3h over here. Correct? Yes, 3 seconds is correct. Samarth, I'll not be able to take doubts from the chat. I hope you understand that. I'll not be able to take, I hope you understand, because we have got very other important questions to do. You understand this, Samarth? Please see this. Okay. So please concentrate. Doubts तो नहीं ले पाऊंगा, समझो इसको, है ना? चलो. Now in this triangle, I can take tan 60 over here. Tan 60 is what? Perpendicular upon base, that is h upon y. Now tan 60 is root 3. So you can cross multiply. Root 3y is equal to h. So we have to find the value of y in terms of x, guys. So in place of h, can I put root 3y over here, guys? Tell me. Then root 3 into root 3 is 3. So this is 3y. So can I say 6x is equal to 3y minus y, 2y? Can I say y is equal to 3x? Tell me. Got it? Now what is the time? Time is equal to distance upon speed. Distance is what? Y over here. Right? And speed is x meter per second. But y we have got to be 3x. So 3x upon x, 3 seconds is the answer. Is this question clear, guys, to every student in this session? Please confirm that quickly. Obviously, if it comes in the examination, you have to write necessary and relevant statements. If you will not write necessary and relevant statements, you will not get full marks, even if your answer is correct. I hope it's clear, guys, to every student in this session. So 3 seconds is the correct answer. Okay. Now this is yet another important question. Many students have this doubt in this question. You have to find the height of the cloud. Have you seen this question earlier? Obviously you must have seen. Let's do that quickly. If the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, what is the height of the cloud? Let's do that quickly. So it is like this. You have got a lake. This is the level of the lake. Okay. And suppose this is the cloud. So from a point h meters above the lake, there is a point which is at an height h meters above the lake. The angle of elevation of a cloud is alpha.
this is alpha. So from this is your height of the cloud. The angle of elevation from this point is alpha. So it will be like this or not, tell me. Exactly, we'll use that only, Anshuman. This I don't exactly remember, but it is an important question. You know that very well. Somewhere in your heart you know this thing. Yes or no? It might be in any book. I hope you understand that. Now the reflection of the cloud inside the whatever is that, river or lake, whatever it is, its reflection will be somewhere over here, C dash suppose. Is that clear? Reflection will be like this. Now angle of depression of the reflection is given. So like this. Angle of depression of the reflection is given to be beta. You have to find the height of the cloud x over here. Correct. Now understand that obviously this is 90 degree, this is 90 degree, 90, 90, 90. So this becomes a rectangle. This becomes a rectangle. So if this is h, this is also h or not, tell me. This is also h or not. This total is x. So this will be x minus h or not, tell me. Is that clear? Now, you know the property of reflection. The distance of the image from the mirror is equal to the distance of the object from the mirror is equal to the distance of image behind the mirror. Plane mirror concept. So if this total is x over here, this will also be x. This you have to understand. That's it. Okay. And then you have to understand the common variable. Suppose this is y. This is common in between these two triangles which we will be using. Are you understanding that? So in this triangle, can we use tan alpha? Tell me. Tan alpha is what? Perpendicular upon base. So x minus h upon y. So you can find y from here. Y is equal to x minus h upon tan alpha. In the same manner, in this triangle, if I'll use tan beta, what is that, guys? Perpendicular upon base. Perpendicular is this thing, x plus h. So x plus h upon y over here. So can I find y from here, guys? So y is equal to x plus h upon tan beta. Now you see they both will be equal or not. That's called variable elimination. That is called variable elimination. That is the crux of mathematics, doing mathematical problems. So both of them will be equal. You can just equate them, x minus h upon tan alpha, and that is equal to x plus h upon tan beta. You just have to find the value of x from here. Cross multiply, you will get x tan beta minus h tan beta. Cross multiply, you will get x tan alpha plus h tan alpha. What you can do? Take this over here, take this over here. I can show you quickly. So x tan beta minus x tan alpha, that is equal to h tan alpha. Guys, these are important. These are important. I will say that 1000 times if you have got standard mathematics. Many students, they make this notion on their own that, oh my God, this question is tough. It will not come in boards. You understand that? I will show you in the next slide what has come in boards. X into tan beta minus tan alpha. Tan beta minus tan alpha. You can take h as common. Tan alpha plus tan beta. So from here you see what is x, guys? X is what? H into tan alpha plus tan beta divided by tan beta minus tan alpha. I hope this is clear, guys. This is the answer and this is the height of the cloud above the lake. Any doubt in this question, guys, to any student in this class? Please confirm that quickly. Please confirm that quickly, guys, in the chat. These type of questions are very well coming in your boards. I will prove that. You see, this is a previous year question. This is the previous year question. I have taken direct screenshot from the question paper of CBSE only, from the website of CBSE. Please understand that if you have got standard mathematics, then only NCERT is absolutely not enough. You have to do at least NCERT exemplar apart from that. Please do away with that notion that if I've got standard math, only NCERT is going to come. This is an NCERT exemplar question. They have twisted that question to make it more easy, to be honest. In NCERT, it is a bit exemplar, it's a bit twisted. So let's do this. The ladder set against a wall at an angle of 45 to the ground. So you have got, you see window and there is ground.
Then you have got a ladder over here, something like this, set against a wall at an angle 45 to the ground. Got it? 45 to the ground. That is given in the question. Then it is given that if the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meters, its top slides a distance of 3 meters. So you're pulling it away through a distance of 4 meters. Its top is sliding through a distance of 3 meters. This is the situation. Top is sliding through a distance of 3 meters. Is that clear? Making an angle 30 degrees with the ground. Making an angle 30 degrees with the ground. This is the thing over here. Is it clear, guys? Now the question is, find the final height of the top of the ladder from the ground. So final height of the top of the ladder from the ground. You have to find this thing. X is the question. Okay, this is the question. From the ground, and the length of the ladder you have to find. Length of the ladder you have to find. Is that clear? And the length of the ladder you have to find over here. So two right angle triangles are there. Suppose this is A, this is B, and this is C, this is D, and this is E. Two right angle triangles are there over here, guys. So over here, basically, I have to find the value of X. So can I use the triangle ABC first? Tell me. I can use the triangle ABC. I can take tan 45 over here. Tan 45 is perpendicular upon base, X plus 3 upon BC. So I can take X plus 3 upon BC. Tan 45 is 1, guys. It means BC is what? X plus 3. You got it? So it means this thing we have got to be equal to X plus 3. Clear or not? Now basically I can take triangle DEC. I can take triangle DEC. In that triangle, can I take tan 30? Tan 30 is perpendicular upon base, that is X upon this plus this. This is the base. So X plus 3 plus 4. That will be X plus 3 plus 4. Tan 30 is 1 by root 3. That is equal to X upon X plus 7. You can cross multiply. That is X plus 7 is equal to root 3X. This is a very important type of question I'm saying. So you see, you can write it like this. Root 3X minus X. That is equal to root 7 over here. X you can take as common. You'll get root 3 minus 1. You'll get 7 over here. So X is what? 7 upon root 3 minus 1. Don't leave the answer like this. You can rationalize the denominator over here. You can multiply and divide by root 3 plus 1. Multiply and divide by root 3 plus 1. So what will you get? You'll get 7 into root 3 plus 1. In the denominator, this is A minus B. So you can use A square minus B square identity. So root 3 minus 1, this is 3 minus 1, 2. So 7 by 2 into root 3 plus 1 is the answer. This is the answer of the first part. Is that clear up till here? Please confirm that quickly in the chat, guys. This is the first part of the question. Now second part over here is you have to find the length of the ladder. You have to find the length of the ladder over there. Is that clear? Please confirm that quickly, guys. So length of the ladder you have to find. It means, you see, this is the length of the ladder, or if you just take it, slide it down, this is also length of the ladder. So it is all up to you. You can take any one triangle out of these two triangles. Suppose I'm doing in triangle ABC only. Okay. So in that case, I want to find this thing, and I know this thing now. Okay. So sine 45 I can do, right? Sine 45 is what? Perpendicular upon hypotenuse. So that is X plus 3 upon hypotenuse is what? AB over here. Correct? This is a bit calculative. So this is 1 by root 2. And X is what? This is X, guys, 7 by 2 into, just do simplification on your own. 7 by 2 into root 3 plus 1. And then plus 3 is there. AB is the length of the ladder. Suppose L I'm putting. So L you can find from this equation. Is it clear?
Just do that, Anshuman. Just simplification you can do on your own as well. It's not that tough, I guess. I hope it's clear, guys. And I guess I have done correct calculations. Sine 45, this is x plus 3 upon AB, correct. So AB will be root 2 times of x plus 3. X is equal to this thing, right? Yes, plus 3. That answer is correct. You can just simplify that thing. I hope it's clear. Simplification means just multiply and don't put anything in place of root 2 and root 3. Many students have this tendency of putting root 2 is equal to 1.414 every time and root 3 is equal to 1.732 every time and pi is equal to 3.14 and 3.143 every time. Don't do that unless specifically mentioned in this question. Unless it's specified in the question, please don't take any value. It will waste your time. That calculation will take 2 minutes. Why will you do that? Yeah, just simplify that. Just multiply and leave it. No problem in that. I hope it's clear, guys. Just check for any calculation mistake. I don't think so I have done any mistake. Correct. This was asked in boards last year or I guess 2023. And then you see this is also an NCERT exemplar question. It was asked in your boards. They have just twisted the question a bit. They have just twisted it a bit. So let's do this question as well. This is again an important question. A spherical balloon of radius, direct screenshot from the question paper asked in CBSE. Please understand that. So a spherical balloon of radius r subtend an angle 60 at the eye of an observer. So if you've got a balloon, obviously you're going to see it like this in 2D. That balloon is subtending an angle. So the angle the balloon will subtend, eye of the observer is this. Obviously the balloon will subtend the angle tangentially as well, tangentially or not. Do you have that feeling? If you've got a balloon, it will subtend an angle tangentially. So it means these lines are tangents. They are subtending an angle 60 over there. So this angle is 60. Okay. Now angle of elevation of its center is 45. You see, this is the eye of the observer over here. This is the eye of the observer. This is the center of the balloon. So angle of elevation will be like this or not? Do you feel that? Angle of elevation will be like this or not? Tell me. Yes or no? An angle of elevation of the center is 45. This is given to be 45 degrees. Now what is the question? You have to find the height of the center in terms of radius. Exactly, we have to prove that. If it is asked in your examination, you have to prove it, Anshuman. Okay? So this is 90. You have to find the height of the center of the balloon. This you have to find. Suppose this is h. Are you getting it? Now you have to do some construction as well. Without construction, you won't be able to proceed in this question. Suppose this is A, this is B, okay, and this is C, suppose. Got it? Now you see this is 90 or not and this is 90 or not because tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. This is radius, this is also radius. Now if you see over here, can I not say that triangle OAE is congruent to OBE over here? Yes or no? Can I say they are congruent by, you can say SSS as well? Because you see, these are equal lengths of tangents from an external point to us. This is asked in CBSE board. This is the screenshot from the question paper, Samarth. Asked in 2023 or 2024. This was asked in CBSE board. It's a direct screenshot from the question paper. This was also asked in CBSE board earlier. You can take it. You can check it. These are board questions exactly. These are very well screenshot. That's what I'm saying. If you've got standard mathematics, please do NCERT exemplar. It's 100% compulsory. I can say that 1000 times. Students are not believing me. I just don't know why. I hope it's clear. So you see, this is equal to this because lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Then you have got this is equal to this radii of the same circle and this is common. So they are congruent by SSS. So if they are congruent by SSS, can we not say over here that angle AEO is equal to angle BEO by CPCT? Yes or no? They will be equal by CPCT. So it means that this is 30. This will also be 30. I hope it's clear.
Please do NCERT exemplar questions, guys. It will not take that much time if you just sit and try. I hope it's clear. Now you can take any triangle, either this one or this one. Suppose I'm taking triangle OEB over here. OEB. So I want to find this thing in terms of R, so that in this triangle, I will use this, and angle 45. Do you feel that? Yes or no? So in triangles OEB, in triangle OEB, can I use sine 60 over there, sine 30 over there? Sine 30 is perpendicular upon hypotenuse. So R upon OE over here. Are you getting it? Now sine 30 is half, that is R upon OE. So from here OE is what, guys? 2 times of R. Now again I can use it. Can I do triangle OEC? If you take triangle OEC over here, can I again use sine 45? Tell me. Sine 45 is what? Perpendicular upon hypotenuse. So H upon OE. H upon OE. Sine 45 is 1 by root 2. Sine 45 is 1 by root 2. That is H upon OE. We already have got 2R. So H is what, guys? H is equal to 2R by root 2. Can I just rationalize the denominator over here by multiplying by root 2 over here? Root 2 into root 2 is 2 only. So this will be cancelled out. So have we proved that H is equal to root 2 times of R? So therefore the height of the center of the balloon is root 2 times the radius of the balloon. Is that clear? Hence it is proved that height of the center of the balloon is root 2 times the radius of the balloon. Any doubt in this question, guys? So that's what I am saying. Please don't think that sir was fear mongering and all that. If you have standard mathematics, please do questions from NCERT exemplar as well. This is direct screenshot from the question paper of CBSE asked in 2023 or 2024. This one, you see this one. You see this question was also asked in CBSE. This is also asked. So please understand that. Pari, I don't know Punjabi. I'm sorry for that. I know only English and Hindi. Okay. So please do it, okay? You still have got some time. Please practice questions from that. So that's all we needed to do, guys. We'll meet in the next session tomorrow on the same Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel from 3:30 p.m., okay? Tomorrow also from 3:30 p.m. I'll meet on this channel. Please come tomorrow so that we can revise and do questions on the next chapter. That's all we needed to do, guys. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. Bye-bye. Take care, everybody.